everyone, I'm Jitendra Singh. I welcome you to Read My Story, where I interview authors, speakers, coaches, celebrities, entrepreneurs and more. Today I have with me Ms Deipti H. Kabhraa. She has done graduation from SNDT University Mumbai and was inclined to achieve her dreams in the field of clothing but could not fulfill her dream. She has a journey of varied experiences which includes changing cities, jobs, meeting new people, knowing them, understanding different people altogether. She is a confident, strong mother of two and a very creative, talented teacher who believed and she still believes that there is an energy which holds us, there is a great power within us and things can be transformed if we believe in ourselves. She started in the field of occult sciences a few years back and gained multiple knowledge in the field of numerology, corporate numerology, name changing, new baby names, corporate name, logo, tarot card, and she also does complete numerology chart preparation and reading and advises solution to varied problems or issues. Her niche is to counsel people and individuals to understand their strengths, weaknesses, work on themselves. She does online as well as offline consultation. Her core objective is to help people by giving her best advice and solution based on their need, requirements, problems, issues, could be personal or from professional life. Today she will be discussing with us about her life journey. So let us hear from her. Welcome Deipti. The platform is open and now over to you. Thank you so much, Jitendra. It's a pleasure to be here on this platform, this wonderful platform. Let me just talk about myself. I was into healing from the beginning. Like when I was in my school, I did my Reiki level 1, Reiki level 2. It was like 25 years ago. I didn't know at that time I was the youngest contestant in the Reiki group in Mumbai. And after that, I was into teaching. I did my graduation from SNDT, as you've already mentioned, and I was into creativity. I used to do different types of things, like many different types of things in my college. Later on, I felt that whatever I have studied, it is not relating to me that time. So I picked up teaching children, young students and children, and I really enjoyed teaching them with stories, with different types of flashcards and different types of creativity. I started teaching them. Right. After my marriage, I conceived within 1 year, and then I went to UAE. There I had different experience of selling. I was into selling cards, and the way I used to sell was again on the phone, and how I used to modulate my voice, and I used to convince the customer to take my product, and it was really fine. I mean, the way it was going was really fun. Yeah. So communication was one thing that I always followed in my life. Good communication and networking. Secondly, then I after my second baby birth, I did early childhood education, since I already told you that I was into teaching. Correct. From Symbiosis, Pune, and then later on certain situations happened. I did another certification course of Jolly Phonics, and I started teaching young children from home. I had a very good batch offline, and a lot of people were there, ladies who used to connect with me to understand what is Jolly Phonics, how to teach children reading, blending, and all that. So I was into all that. Yeah, so I was into all that, and basically teaching children. That time also I didn't know that it was a part of healing, because teaching really needs a lot of patience. Correct. So patiently how to handle the children and in a very creative way, which I found lacking in many teachers. Something was different. Like if you are aligned with your mind, body, soul, then only you can connect with something. And within 1 hour, so you are teaching so many children, but the concept what you teach should just go into the child's mind. So this is what I used to do very well. Right. After that, suddenly the inclination towards numbers happened. There was a course online, and I picked up, and I used to read books on numerology, and I was inclined towards it from the beginning. But then
then I was very curious कि अलग अलग name change क्यों करते हैं, कोई letter जा रहा है, कोई I was very inclined towards all that, and then some things happened on a particular day, some things didn't happen. What was the reason? Yeah, and there was a certain type of struggle which I went through, and at that time I hopped to many astrologers. So उस time पे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि how to go about, you know. Then yeah, so then suddenly, not suddenly you can say, but then I used to hear Sister Shivani a lot. Now also I hear her, and I followed her a little advices, not completely in Brahma Kumaris, but I followed a little that, you know, a person who is behaving weird or screaming or not proper, so you should you know, understand that the soul is really in pain. So I followed a few things of hers, and I tried to use that in my life, okay, in my daily, where I used it, and that concept I mean I continued taking it. And then talking about numerology, I studied from many mentors. Okay, I did my numerology from different mentors, learning name correction, chronology, and in the middle of that, I started taking consultations as well. And so consultations are online and offline both. So this is how I started journey of numerology. And numerology is basically, it got connected to me because कहीं ना कहीं numbers जैसे हम पैदा होते हैं, हमारा डेट ऑफ बर्थ में, हम किसी डेट ऑफ बर्थ में हम पैदा होते हैं, तो नंबर्स हमारा बचपन से ही साथ आ जाते हैं नंबर्स के साथ में. बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल में उसको एक रोल नंबर मिलता है. Everything have some significance to number. Definitely, I'll come over to this again soon. So first of all, I'd like to know more about you, how your personal life was, like how it has affected you, the person who you wanted to be, and what you are. Like you already mentioned that you had some inclination towards clothing and all kind of a business, but you could not do it. So I'd like to know more about what you were having thought, what you wanted to do, and now what you are doing. Frankly speaking, when I joined SNDT, that time I didn't know what am I going to do in the future. I was really haywire. I didn't know what to do. आगे मैं क्या करूँगी मुझे नहीं पता था. I'm being very honest. लेकिन I knew that I was wrong. I was confident. मुझे कहीं ना कहीं पता था कि मैं कुछ different करूँ. ठीक है, मैंने clothing लिया, but मैं clothing कभी pursue ही नहीं कर पाई. मैं समवेयर कहीं ना कहीं शायद थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था. थोड़ा सा उस टाइम पे थोड़े से इश्यूज भी थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था. लेकिन फिर मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया. बच्चों के साथ में बहुत अच्छा लगता था मुझे. मेनली मेरे को पीस मिलता था काफी. तो दैट आई स्टार्टेड. मुझे क्लोथिंग का मैंने उस टाइम पे किया, बट मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे सेटअप करूँ, क्या करूँ. मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था. Because you being like quite young that point in time, and you were not able to explore much onto it. Then I got married at the age of 24. 24 में I got married, and होता है ना, एक नया मैरिज हुआ है तो you are bubbly types, you want to enjoy life, and there's a different change for me. Then I went abroad. वहाँ पे मैंने कुछ और पकड़ा. Means I was good at communication, तो मैं वहाँ पे सेल करती थी कार्ड्स को, और वहाँ पे मैंने नया टैलेंट एक्सप्लोर किया कि मुझे पता चला कि मुझे नेटवर्किंग अच्छा है मेरा, मैं मार्केटिंग अच्छा करती हूँ, मैं सेल्स अच्छा करती हूँ. सो फिर मेरी बेबी कंसीव हुई. सो उसके बाद में मुझे कुछ परमानेंट, मतलब कुछ स्टेबल कुछ नहीं मिला कभी भी करने के लिए. बट देन अगेन आई न्यू दैट आई वांटेड टू डू टीचिंग अगेन. सो आई केम अप विद माय चिल्ड्रन अगेन. सो मैंने जॉलीफोनिक्स करके फिर से मैंने शुरू किया, सिम्बायोसिस से वो किया, एंड अगेन आई स्टार्टेड समथिंग बिकॉज इट वाज इजी विद मी, बिकॉज आई हैड 2 children at home to take care, and my house also. That responsibility also comes in. Yes. और उस टाइम पे ना कोई ऑनलाइन का इतना कंसेप्ट नहीं था. इट जस्ट happened after COVID. के बाद में ये ऑनलाइन का कंसेप्ट शुरू हुआ. और फिर मुझे लगता था कहीं ना कहीं कि कुछ और एक्सप्लोर मैं कर सकती हूँ. आई हैव समथिंग मोर इन माय पर्सनालिटी. मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा मोटिवेट कर सकती हूँ लोगों को. एंड बातें सुन के, बिकॉज जो मदर्स थी, जो बच्चों की मॉम्स थी, उन्हें मैं काफी सारी आइडियाज देती थी और मोटिवेट करती थी कि आप कुछ काम करो, कुछ डिफरेंट करो, डोंट वेस्ट योर टाइम. उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि मेरे पास में आई वांट टू मोटिवेट पीपल,
or I want to do something to coach them. Right, right. So here, when I did numerology, this helped me with this part of mine that I could use my motivational skills, my communication, my conviction, and also when I take a date of birth, I attach the person's strength more. तो एक person को uplift हम कैसे कर सकते हैं वो मैं numerology consultation के through करने लगी. So this is it. My personal life has been average, up down चलता रहा, good bad जैसे सबके life में होता है. Right. Due to certain changes of jobs and ये वो, but it was good. My husband always supported me in things. My parents also always supported me, and my brothers, parents, in-laws, पूरा family का मुझे support मिला, and yes, and here I am. I mean, great, wonderful. So if I talk about the things you are passionate about in your life, what are those things? Achha, if you talk about passion, the first thing I enjoy. Passionate about, you mean to say some hobby? Anything like what you want to do, what you are doing, kind of makes you. I want to be a good motivational speaker in future. I want to become a motivational speaker. I want to talk to people, and because I feel I connect with them and I can do some changes in their life. I feel good. Like you want to help people in whatever ways possible. Yes. Right, and you are already doing. And I am मेरे जैसे बिल्डिंग में नए लोग आते हैं, कोई नया आ रहा है, तो I spend some time to go and meet them and to put some help for them कि कुछ आपको अगर कोई numbers चाहिए तो आप उनसे बात करिए. I don't want to leave them alone. I don't feel like leaving them alone. मैं rather than sitting down with बहुत सारे kitties ये वो ज़्यादा नहीं करती, जो मुझे थोड़ा time मिलता है, so I try to talk to people who are new इस तरीके से, and I enjoy going out with my children a lot. बच्चों के साथ बहुत connection है मेरा. I love to talk to them and explain them things because my daughter is a teenager. My younger one is also 7-8 years. काफी huge gap है दोनों में differences भी होते हैं. Right, so I am the bridge between trying to. And the kind of needs, requirements, expectations are entirely different. Exactly. Correct. And I also I really find that you are very much passionate about working with kids. थी मैं, अब मुझे नहीं पता मेरा पेशेंस लेवल कैसा है बच्चों के लिए. बहुत ज्यादा फोनिक्स पढ़ाती थी तो आई एम नाउ ऑल्सो, लेकिन अभी थोड़ा मैं बड़े लोगों के साथ डील करने लगी. The kind of work related things. हाँ, और अभी मेरा ना intuition based work है, so I have to do a little meditation to connect with myself and to give answers. So मेरा intuition, my knowledge and भगवान की कृपा है कि मैं ये काम कर पा रही हूँ. और न्यूमरो के थ्रू मैं लोगों को अप्रोच कर सकती हूँ. So मेरे हिसाब से क्या है कि रेमेडीज तो आप देते ही देते हो किसी को, लेकिन अगर आप उसके थॉट्स को थोड़ा सा आप चेंजेस दो, अगर उसको एक अच्छा वोकैबुलरी के साथ बताओ, तो काफी सारी चीजें लोग उसी टाइम पे उसका मूड अपलिफ्ट करके आप काफी सारी चीजें आप आगे बढ़ा सकते हो आप. Right. So if I tell कि भाई आगे आपका एक बहुत ही अजीब सा वक्त आने वाला, अगर मैं डायरेक्टली अगर किसी को बोलती हूँ या फिर मैं उसकी जगह ये बोलती हूँ कि अच्छा यू जस्ट टेक केयर ऑफ समवन, थोड़ा सा आप ये चीजें ऐसे करिए. Right. So this way it makes a difference. It's better to tell them indirectly instead of directing, like direct telling. Yeah. So instead of directly telling, better to go indirect. Yeah. So if I talk about your work and experience, you already mentioned that you have worked as a teacher. You have taught few of the things there. Now you are 100% inclined towards numerology and spirituality kind of a thing. So how was your experience when you were facing different kind of audience, like you were handling kids, now you are entirely dealing with grown up people who are already in their business, might possibly in job. So what is the experience shift from there to now? See, kids were very innocent. बच्चों के साथ डील करना एक innocence और एक fun type था. और बड़ों के साथ अभी बड़ों से मैं बातें करती हूँ तो बड़ों के साथ एक अलग एक्सपीरियंस है भाई, उनकी भी कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस, लेकिन यहाँ किड्स का थोड़ा सा फन पार्ट था जो समटाइम्स आई मिस, sometimes I feel, because इतने मासूम होते हैं वो बच्चे कि जो आप बोलते हो they love you,
they will follow you. और बड़ों के साथ ये है कि चलो ठीक है, आज आपकी बात उनको ठीक लगती है, फिर maybe after some time उनका थोड़ा सा शिफ्ट होता है चीजें उनके माइंड. लेकिन हाँ, I'm enjoying this job as well. ये इससे भी मुझे अच्छा लग रहा है because basically I am trying to with my numero numbers, date of birth या नाम से मैं थोड़े से उन लोगों की लाइफ में चेंजेस ला रही हूँ. So that is a good feeling for me. Correct. Like helping others is definitely a good thing. Yeah, it's a good feeling for me. Wonderful. Yeah, obviously बच्चों का भी मैं छोड़ूंगी नहीं. I may start some batches very soon. Okay. But अभी मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ा रही भी हूँ, मैं पढ़ाती भी हूँ अभी. एक सर है हमारे सचिन कुमार गुप्ता जी दिल्ली से. हमने दोनों ने मिलके अभी एक हमने कोर्स हम ला रहे हैं प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी पे. Coming on the 30th May. जी. This is really nice. Now I'd like to ask more about like your vision, mission, and goal. So it was good to hear about the kind of shift in your experience from children to like elder people working with them. So now I'd like to know more about your vision, mission, and goal in life for next 5 to 10 years. So in this period, what you want to do, like how you want to help people, what you want to do, everything. For the next 5 years, I want to grow in this field as in numerology and vastu. Vastu मैं अभी सीख रही हूँ. Okay. So ये तीनों चीज मिला के I want to start a journey where I earn also and I help people also. अगर मेरे मोटिवेशन से या मेरे गाइडेंस से और मेरे रेमेडीज से अगर चीजें चेंज होती है किसी के लाइफ में, तो दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी. सो मेरा मेन यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीच करूं एंड उनकी जिंदगी में कुछ चेंजेस लाऊं, शादियों को बचाऊं, अभी मेरे एक काउंसलिंग हुई थी एक कपल की, मैंने की थी न्यूमरोलॉजी का चार्ट्स देख के उनको मैंने दोनों को समझाया. समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू टॉक अबाउट थिंग्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स, लेकिन जस्ट विद द न्यूमरो चार्ट्स मैंने काफी उनको अच्छे से काउंसिल किया, दोनों की बातें सुनी एंड देयर वाज अ शिफ्ट इन देयर रिलेशनशिप. सो इट गेव मी अ बूस्ट. सो दिस गेव मी अ बूस्ट कि हाँ ठीक है, ये चीजें भी ऐसे मैं चेंजेस कर सकती हूँ. तो काउंसलिंग है ना, उनको ये समझाना कि भाई आपकी सोच को आपको कैसे चेंज करना है, कैसे रखना है. नथिंग इज परफेक्ट, बट आप किस तरीके से चीजों को चेंज करके अपनी जिंदगी को बेटर कर सकते हो. तो वो चीजें मैं विजन मेरा यही है कि मुझे लोगों को हेल्प करना है एंड साथ साथ मैं इस फील्ड में ग्रो करूंगी. और ये मेरे लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है विद माय फैमिली. आई एम एबल टू डू दिस मच. सो ये मेरे लिए फ्लेक्सिबल भी है, इसीलिए मैंने ये पिक किया बिकॉज आई हैव 2 चिल्ड्रन हु आर ग्रोइंग टू लुक आफ्टर. जितना मेरे से अभी हो रहा है, तो आई एम डूइंग दिस अलोंग विद दैट. आई विल एक्सपैंड इन द फ्यूचर इन दिस. मतलब मैं टीच भी करना चाहती हूँ न्यूमरोलॉजी एज आई एम डूइंग. मैं उसको पढ़ाना भी चाहती हूँ एंड आई ऑल्सो वांट टू टीच रिगार्डिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो मैं बहुत अच्छे से बहुत मानती हूँ. Right. Yeah. This is really amazing. Wonderful to hear that you want to help people in a way that not only like personal numerology and these kind of a thing, but also in terms of helping them with their relationship as well. Yeah. This is really wonderful. So if I talk about the most important lessons you have learned from your life, what are those? And it could be from personal or professional life. Don't try to change others. Try to change yourself. दूसरों को चेंज करने की कोशिश मत करो. एंड समटाइम्स जस्ट इट इज द डिवाइन कॉलिंग दैट थिंग्स हैपन. वी मीट पीपल एट टाइमिंग. दिस इज ऑल द डिवाइन कॉलिंग. देयर इज सम कनेक्शन. जब वो चीजें खत्म हो जाती है तो द सोल मीन्स हम अलग अलग हो जाते हैं. सो डोंट ट्राई टू चेंज अदर्स. वी आर ऑल डिफरेंट बीइंग्स एंड वी कैन ओनली adjust and we can try and understand others' perspective. Right. Do not try to change because your children are different, your husband is different, your family is different, everyone is different, and we expect कि a certain way में मुझे treat किया जाए. So maybe that is another way of showing love from their side. So we expect something from them, but there is a different way of showing love. So we should understand that they are different and we are different. Right. Wonderful thought. Thank you. So if I like talk about like we were talking about numerology so far, so I'd like to know more onto it. Like
how what is numerology, how it works, and how it started actually. So basically, numerology is a very old science. Okay, ये Chaldean numerology बेबीलोनिया से आया है, बहुत ही पुराना साइंस. उसके बाद में पाइथागोरियंस ने कुछ चेंजेस किए इसमें, ठीक है. और ये 500 BC से भी पुराना काफी टाइम हो, मतलब बहुत एंशिएंट साइंस है ये. राइट. और ये बेसिकली नंबर्स के साथ अटैच्ड है. इट इज साइंस ऑफ नंबर्स, एसोसिएटेड जो नंबर्स हैं आपके लाइफ, ये कुछ ना कुछ प्लैनेट से डिनोट करते हैं. So that is a part of occult science, just like astrology. Okay. But astrology is a little deeper way, और बहुत ज्यादा चीजें हम उसमें से निकाल सकते हैं. But numerology is also again a very vast science, and the main अभी जो चल रहा है वो है Chaldean numerology. Okay. Chaldean numerology अभी चल रहा है. There are different types of numerologies, Pythagorean, Kabbalah, Chaldean, और बहुत सारी चीजें चल रही है. Okay. जो हम लोग अभी जो बहुत ज्यादा अभी चल रहा है वो है लोशु और चाइनीज टाइप ऑफ न्यूमरोलॉजी और Chaldean और वैदिक न्यूमरोलॉजी जिसे हम सफेरियल ग्रिड भी कहते हैं, वो भी चल रहा है. और न्यूमरोलॉजी में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम किसी पर्सन का लक को बढ़ाते हैं. ठीक है, हम उसके लक को बढ़ाते हैं. जैसे हम एक गाड़ी, एक जर्नी में जा रहे हैं, तो गाड़ी और द ट्रेन जर्नी इज योर डेट ऑफ बर्थ, when the person is born, and the driver of that car is the name number. Okay, so suppose my name is Deipti kabhraa. पहले मेरा शादी से पहले कुछ और नाम था, so now my name is Deipti kabhraa. So the first name carries a certain vibration. According to Chaldean, we calculate and we come to a particular number, and when we calculate the whole name also, again it comes to a particular number. Now your first name should be compatible with your date of birth, your birth number, your destiny number, your number. Your whole number, whole name also should be compatible. Okay, so ये बहुत सारी चीजें हैं. So now we are talking about the journey of the car. So the name number is the driver of the car. So अगर ये name number synchronize होगा तो आपकी journey of life smooth हो जाएगी. Right. So what we as numerologists we do is we synchronize the person's name, the first name, the letters, a combination of letters, and the whole name as well with the date of birth. So this is the job of the numerologist to synchronize the name properly. ठीक है. हमें पहले के जमाने में क्या था ना, लोगों को इतना आइडिया नहीं था न्यूमरोलॉजी के बारे में. अब ज्यादा लोगों को जानकारी हो रही है, और लोग अभी अपने बच्चों के नाम भी न्यूमरोलॉजी से रख रहे हैं. ओके, विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रो एंड न्यूमरो मिला के वो लोग रख रहे हैं नेम्स को. एक अच्छा नेम एक बहुत ही अच्छा लाइफ, मतलब एक एटलीस्ट ये तो आपके माइंड में है कि हमने चीजों को सिंक्रोनाइज किया. अप डाउन तो लाइफ में होएगा ही, उसको तो आप नहीं छोड़ सकते. इट इज रिटन इन द डेस्टिनी, इट विल हैपन. But we can change a little things about ourselves and we can take precaution. I mean, कुछ चीजें हम change करके हम उसे balance कर सकते हैं to bring more luck and success in our life. Correct, like building more opportunities in a way. Exactly. Right, wonderful. So if I talk about numerology, like how it can be, it can relate to different aspects of our life altogether and guide us through the solutions or make it in a better way. Like you just mentioned that it boosts your luck or it enhances your luck. So it's all about that, like how it helps us. Okay, as I told you, numbers हमारे साथ में attach होते हैं. So we synchronize the name number. Then we also can alter the mobile number. The mobile numbers भी हमारे साथ में associated होते हैं. कहीं ना कहीं मोबाइल्स यूज करते हैं. उसके जो numbers है, उसका जो टोटल है, उसके अंदर जो combination of numbers है, ये सारे हम एक अच्छे नंबर को यूज करके हम लाइफ में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं. साथ साथ हम अपनी गाड़ी का नंबर, अपने घर का नंबर, हम ये भी हम सिंक्रोनाइज कर सकते हैं. वी कैन टेक अ फेवरेबल नंबर ऑफ द फैमिली मेंबर, द ओनर ऑफ द हाउस, द लेडी ऑफ द हाउस. इन लोगों के साथ में हम एक कॉमन सा एक बैलेंसिंग नंबर भी हम लोग ले सकते हैं. So because the house number also matters, the vehicle number also matters, the mobile number also matters. हाँ, बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं लेकिन हो नहीं पाता, लेकिन मैक्सिमम चीजें हम कर सकते हैं. लकी कलर्स, लकी डेट्स, लकी डेज. हम जैसे अब मेरे पास में कोई पर्सन आता है, सपोज शी इज बोर्न ऑन द
suppose 10th January 1995 suppose the date of birth comes to me. तो अब मुझे पता है कि इनके साथ में ये नंबर एंटी जा रहा है, तो आई वुड सजेस्ट दैट पर्सन कि भैया आप 8 तारीख को ज्यादा कोई मतलब कोई डिसीजन मत लीजिए, या डोंट ट्राई टू आर्ग्यू विद एनीबॉडी, जस्ट गो विद द फ्लो। या तुम्हें कोई काम करना है तो आप इस डेट को करो, इस डेट को नहीं करो। सो दिस इज व्हाट वी एज न्यूमरोलॉजिस्ट हेल्प देम टू अंडरस्टैंड व्हिच आर द गुड dates for them, days for them, which colors they can use in their day-to-day life, and the name how they can manifest that name. साथ साथ मैं कुछ उन्हें मंत्र रेमेडीज भी देती हूँ। See, I really tell you, everything is predestined. कुछ तो हमारे कर्मास भी होते हैं जो हमें, so it is a little important theory which it is little out of the topic, लेकिन मैं जस्ट 1-2 लाइन में बोलूंगी कि कर्मास आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप अपना कर्मा को, जैसे आपकी सोच, आपकी बोल, आपके थॉट्स और आपके आप किस तरीके से आपके पहले के कर्मा के सारा कुछ एड ऑन होता है, जो पहले के हो तो आप कुछ डे टू डे में आपको समझ में आ रहा है, अननोइंगली नोइंगली आप किसी को हर्ट मत करो, यू फील दैट कुछ प्रॉब्लम्स है तो यू जस्ट शिफ्ट फ्रॉम दैट प्लेस एंड you know, make it right. So karmas also matter to you. Along with that, these remedies, things also matter to you for getting opportunities, success. Correct. You get opportunities based on like your karmas as well. Yes. That again is a great driver. So numerology can help us in a way like it can negate. Suppose, for example, I'll tell you one more example. Sorry. Suppose the marriage, एक मैरिज के लिए एक मॉम आती है कि भाई मेरे बच्चे की मैरिज करनी है और ये डेट ऑफ बर्थ है इनके पास, तो हम लोग डेट ऑफ बर्थ को मैच भी कर सकते हैं। जैसे आप एस्ट्रोलॉजी में मैच करते हो, वैसे आप न्यूमरोलॉजी में भी चार्ट्स मैच कर सकते हो। क्योंकि इनका जीवन का सवाल है, तो न्यूमरोलॉजी से आप मैचिंग कर सकते हो। आपको आइडिया आ सकता है कि नंबर कैसे जा रहे हैं। Both these person would be compatible with each other or not. Yeah. अब वो आगे क्या करते हैं क्या नहीं करते, we cannot do much about it. Later on we can counsel them. लेकिन अभी हाल फिलहाल at this primary stage तो आप उनका मैचिंग कर सकते हो। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पता है कि मेरे डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर्स नहीं है, 1-2 नंबर्स नहीं है, लेकिन सामने वाले के पास में मेरे स्पाउस के पास में ये नंबर है, तो मैरिज के बाद में वो स्पाउस का लक भी ऐड होता है। तो नंबर्स के वाइब्रेशंस हमें भी उसका सपोर्ट मिलता है कहीं। Right. Yeah. This is तो kind ये सब न्यूमरोलॉजिस्ट ही बता सकते हैं आप। And this is really kind of interesting thing. I also finding some interest onto it and really amazed to know all these things, because I was aware of numerology to some extent in a way that like your date of birth have some significant number and your like name also have some significant number, and the combination should be like matched in a way that it can help you. So like I'm coming on to a point like about name change or finding a baby name, and people go for that like people who are using same name for a long period of time, maybe ages. Someday like we see that they have gone for a name change, and after they do a name change, things start to fall in place in a positive way. So I want to know more about it, like how changing a name or like finding a right name to baby on the basis of numerology, how does it help and what impact it creates? See, basically your name works like a mantra in your life. ठीक है, बचपन से आपको अब जितेंद्र या जीतू, whatever they call you, ये एक मंत्रा बन जाता है आपके लाइफ में। लोग 2-2 नाम रखते हैं, एक पेट नेम रखते हैं, एक अच्छा नाम रखते हैं, लेकिन जो ज्यादा से ज्यादा पुकारा जाता है वो आपका नेम ज्यादा वाइब्रेट होगा, राइट? तो नाम के अंदर काफी वाइब्रेशंस होते हैं। एंड सपोज आप कोई एक एक्टर को ले लो, जैसे अब ऐश्वर्या बच्चन है, ऐश्वर्या नाम सुन के ही आपके अंदर एक फीलिंग होती है, यू नो, लाइक a very positive, a very successful name, Aishwarya. Aishwarya name itself is a like word signifies success. Yes, exactly. So name correction celebrities ने भी काफी किए हैं। अच्छा, मेरे को इतना नेम चेंजेस के बारे में after I did a course on chronology, तो मुझे आइडिया आया कि नेम में आपके वाइब्रेशंस होते हैं, कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस होते हैं, एंड सपोज कुछ लेटर कॉम्बिनेशंस होते हैं, they denote you know, money, success and good relationship
लक्ष्मी, all this is there in the name. ठीक है, और नेम में नेगेटिव फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कोई एक नेम में ज्यादा आप वाइब्रेशन देखो तो जैसे मैन का वाइब्रेशन अगर देखो तो उसमें मतलब पूरा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है वो पर्सन उस काम करने के लिए, मतलब आप देखो ऐसे ये सब काफी सारे रिसर्च आप करोगे तो आपको आइडिया आएगा कि नेम में क्या वाइब्रेशन होते हैं। तो लोग नेम चेंज क्यों करते हैं? लोग नेम चेंज इसलिए करते हैं कि उन्हें अभी ये चीज का एहसास हो रहा है कि मेरा नेम से मुझे इतने टाइम तक ये प्रॉब्लम्स आ रही थी कहीं ना कहीं, ठीक है। नेम में वाइब्रेशन होते हैं, तो जब नेम चेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं वाइब्रेशन चेंजेस होते हैं, लेकिन इट टेक्स टाइम, इट रियली टेक्स टाइम, बिकॉज उसको कितना टाइम आप मैनिफेस्ट करते हो इट डिपेंड्स ऑन दैट। अच्छा, न्यू बेबी नेम आप रखते हो तो न्यू बेबी नेम में आप उसका लकी लेटर चूज करते हो, बर्थ डेट देखते हो, उसका एस्ट्रो में देखते हो कौन से नक्षत्र कौन से पद में पैदा हुए हैं, चरण एंड वो सब देखते हैं, और फिर आप प्रॉपर एक नेम देते हो विद गुड वाइब्रेशंस, विद गुड नंबर, द फुल नेम नंबर हम देते हैं उससे। सो दो तरीके से, वन वी कैन डू द एग्जिस्टिंग नेम में ही हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, और दूसरा हम पूरा ही नेम, फर्स्ट नेम चेंज कर सकते हैं, एंड इट डिपेंड्स कि सोल एक्सेप्ट करता है तो द पर्सन कैन गो अबाउट। बहुत सारे लोग करते हैं, और कॉर्पोरेट it is easy, like बच्चों के लिए तो it is quite easy, but for a people like us, like for me, if I say I've been using my name for 40 years, so it would be difficult for me to have a different name altogether. To adapt, yes. Correct. So changing spelling would be a kind of thing which could be acceptable, but kind of entire name change would be difficult at this age. Correct. So name correction, आपके जो spelling change है उसमें भी काफी टेक्निकल चीजें होती है जो हम लोग समझ के करते हैं. It takes time. Everything takes time. Right. We need to see which combination is working, which name numbers. They say it's just not the addition of letters and putting here and there. No, it is a greater part. Apart from that, इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग देखते हैं, which letter to add, how to whether it will be favorable or not. The numbers जैसे बहुत सारे आप मार्केट में देखोगे, अरे 42 अच्छा, अरे 24 अच्छा है, ये अच्छा है, लेकिन ऐसे आप नहीं कर सकते. It is not favorable for everyone. Correct. So Agree. We need to look onto it also. And corporate numerology में भी names, company के names, proprietor companies, private limited companies, ये भी हम लोग set करते हैं names. We have a team of people who are there together to help each other. Right. Wonderful. Yeah. So now moving back to you again, if I talk about you, are you an introvert or an extrovert kind of a person? And what are the pluses and minuses like when you face your audience or meet people? Like any other person, even I have my lows, highs. Okay, some days I'm very aligned, some days I'm not aligned. Emotional भी बहुत हो जाती हूँ. I don't know how to call myself, how to fix up things. Some days I'm not able to do my things properly. Right. But my strengths are that I don't give up. Whatsoever happens, I don't give up. I know I have to do this. I will do it. There are certain strengths in me that I use affirmation with me. I regularly use affirmations for myself. That I'm a strong person. I'm powerful. I can do it. And things are happening with me, and success is my benchmark. Such type of affirmations. So whatever I give to others, I give different types of affirmations regarding different things, but I use it for myself as well. So my strengths are basically I keep going and I take it as it comes. Like one day as it comes, because I know my numbers and I go with the flow. Right. Okay. And my weaknesses are that sometimes I'm impatient, impulsive. That बहुत सारा कुछ मैंने अपने आप को संभाला है. And sometimes I overthink as well. I think a lot about certain things. So kind of that mix. It is a mix, right? But I am an extrovert girl. I speak out to people. I meet people. I love getting I talk to people to understand certain things. Resources मैं बनाती हूँ. जैसे मैं आज नदियाद आई हूँ. I have come for the first time. My husband works here. मैं यहाँ पे आई हूँ. So I have made friends out here. There's a Gujarati lady. I spoke to her in Gujarati and I got rapport built कर लिया मैंने. और मैंने
कॉन्टैक्ट्स बनाए मैंने उनसे, मैंने उनको न्यूमरोलॉजी के बारे में बताया. I told her certain things about Vastu. So we shared knowledge. We had a nice time. So this just keeps me away from being isolated. Wonderful. So, talking and yeah. That is really important too. So if I talk about the kind of support and in your journey, like who all supported you the most? Support तो मेरा रहा है मेरे father, mother, my father-in-law और मेरे husband. Right. They have all my brothers as well. They have all supported me in this journey, appreciated me. एंड साथ साथ मेरे जो क्लाइंट्स है एक्सटर्नली भी मुझे काफी सपोर्ट मिला है. मेरे जो क्लाइंट्स है उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है. They refer me to people. They trust me. They believe in me. They are associated with me. They have a faith in me. Yes, ma'am is there with us. You know. So कोई मुझसे जुड़ते हैं, so they are with me. It is all. Definitely. This is so wonderful. And if I talk about the kind of inspiration and motivation in your life, how you get your motivation and inspiration from? Frankly speaking, I only push myself. It is me who pushes herself. I only push myself. My children are my motivation. When I look at them, I feel no, I have to do it for my kids. No, I have to be a role model for my kids. I have to do it. So when I do hard work, my children will also feel, oh, mama is a creative lady and she does hard work and she meets people and she's out of the box thinking she does and all. So I myself, I am an inspiration. तो कुछ भी नहीं है, but yes, people around me बहुत कुछ कर रहे हैं लोग. मुझे मैं विवेकानंद जी को बहुत फॉलो करती हूँ. ठीक है, उनका थोड़ा स्पिरिचुअल जो है उनका, मैं काफी सारी चीजें उनकी मैं फॉलो करती हूँ, उनके बारे में पढ़ती हूँ मैं. Right. So if I talk about your take on success, so what do you think success is to you? For me, success is frankly speaking, for me, peace of mind and people getting the maximum benefits of what I'm giving them. That is going to give me more happiness. Money comes later. Money aayega hi. Correct. Okay. Yeah. So for me, this is more important. When my people are more happy and they are getting the results, and I feel whatever I take from them, I have done. जब मैंने पूरा काम किया है उनके लिए. True. And then they refer to other people. अगर उन्हें अच्छा लगे तो, बिकॉज मेरा काउंसलिंग, मेरा उनको समझाना, उनका मेडिटेशन की तरफ उनको रुझान करना, उनका अफर्मेशन उनको बताना, ये सारी चीजें अगर उनको हेल्प करता है लाइफ में, तो वो मेरे लिए बहुत सक्सेसफुल है. एंड ऑल्सो जब मेरे बच्चे भी अगर आगे बढ़ के कुछ अच्छा करे, कुछ समझे, दैट इज मोर वेरी फ्रूटफुल थिंग इन माई लाइफ. Great. So now we are moving on to the last question of the day. So any message, advice you would like to make to our audience, viewers and listeners both? Yeah, never panic in any situation. Never panic in any situation. Right. The divine is there. Please pray every morning. Get up in the morning and try and pray to the divine. जिस भी भगवान को आप मानते हो, आप pray करो, meditate करो. और थैंक्स करो कि आज हम लोग वी आर अलाइव एंड वी आर गेटिंग फूड, वी आर गेटिंग द मीट, चीजें पूरी हो रही है. कंप्लेंट्स तो कभी खत्म ही नहीं होंगे हमारे कि ये है और वो नहीं है और वो नहीं है. बट don't panic, because this is a journey which is not permanent. It is a temporary journey. हम लोग यहाँ पे आए हैं और mentally अगर हम खुश रहेंगे तो हम physically भी खुश रहेंगे. Physically भी हमारे ailments नहीं होंगे. Yes. So just don't panic. Just pray and things will fall in place. अपने आप कहीं ना कहीं से रास्ता बनेगा. And do good karma. डू गुड कर्मा. किसी की हेल्प कर सको तो करो, कुछ अच्छा आप पढ़ सको तो पढ़ो. अगर कोई डिस्ट्रेस में है तो 2 शब्द उनको अच्छा बोलो, उनको थोड़ा सा हेल्प करो. That will take you way ahead in life. Correct. That is really a wonderful thought, and helping others is a wonderful thing. Everyone should, in a way, whatever they feel like, whatever they can do, they should do it. Yeah, in terms of donating money. Yeah, some people can do it in a way, they can donate something. Some people can donate their time. Some people can help people to educate. Some people can inspire others. Any which ways you can help people, try to help. Correct. Yeah. So I must say it was amazing talking to you. The insights you have shared about numerology and spirituality were really amazing, and I think
the discussion is a very little about these things. We need to talk later on in detail about so many things which we have not touched upon related to numerology and spirituality. So I'm looking forward to hear more from you again soon. I really enjoyed our conversation and looking forward to invite you again and talk about some other topic. So thank you so much, Deipti, for your time. It was wonderful discussing today. Thank you. Thank you so much. And I will also share your website and social media link with the video so that people can be in touch with you, take your help, guidance. So that will be really helpful to them. So guys, don't forget to check that out too. Thank you so very much everyone for watching and listening. I hope you all must have gathered a lot of valuable and insightful information and enjoyed watching it too. Don't forget to like, share and subscribe. Have a good time. Thank you and bye-bye. Thank you so much.